हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। सो आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल स्लीव डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। इसको बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए देखिए ये मैंने इस तरह का एक चंदेरी कॉटन में फैब्रिक लिया है और इसको मैं इसके लाइनिंग फैब्रिक के संग सबसे पहले स्टिच करूंगी। तो इस तरह से आप हर तरह से इसको स्टिच कर लीजिए इसकी ऑल साइड से। और उसके बाद मैं इसमें बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम सिंपल से डिज़ाइन से एकदम स्टाइलिश एक डिजाइनर स्लीव्स पैटर्न बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पहला पूरा ये स्टिच हो गया। उसके बाद हम लेंगे ये एक तरह की गोल्डन लेस है। तो ये मेरे किसी प्रोजेक्ट से बच गई थी तो उस लेस को मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ और इस तरह से देखिए इसको पूरे में इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिच होने के बाद ये देखिए इस तरह से दिखेगी। ऑलरेडी ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देखिए, अगर आप स्लीव पे कोई भी लेस लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। देखिए ये इसके संग बहुत अच्छी लग रही है। और अब मैं लूंगी ये दो बटन। तो ये गोल्डन कलर के दो बटन हैं जो इसके संग बहुत अच्छे लगेंगे। इनको मैं स्टिच कर लूंगी, हाथ से स्टिचिंग करनी है इनकी। और देखिए ये इस तरह से मैं यहाँ पे इनको यहाँ पे इस फैब्रिक के संग टक इन कर रही हूँ सुई धागे की हेल्प से। और एक बार होने के बाद इस तरह से देखिए ये बहुत ही सुंदर सा स्लीव पैटर्न बन जाएगा। और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा। और इस तरह के और स्लीव डिजाइन देखने चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो ये देखिए ये जो फैब्रिक है ये मैंने एकदम कॉटन वाला फैब्रिक लिया है और साथ में मैंने ये इस तरह का एक ब्रोकेट में फैब्रिक लिया है। और इसको इस तरह से देखिए उल्टा करके मैं यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बनाऊंगी। सिंपल सा वी बनाना है हमें। इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और इस पे वी बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये आ जाएगा। और अब इस पे ही हम सीधे में एक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधे में इस तरह से स्टिच लगा रही हूँ और जहाँ पे वो हमने मार्क किया था वहाँ पे भी हमें स्टिचिंग करनी है। और ऐसे एक बार नहीं दो बार कर लीजिए, स्टिचिंग कर लीजिएगा। और फिर जहाँ पे हमने ये बनाया था पार्ट इसको कट कर लेंगे। तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकता है, अपने हिसाब से जैसा भी पैटर्न बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैं ये देखिए इस तरह की सेम कलर की जो वेलवेट फैब्रिक में एक मेरे पास लेस थी वो यूज कर रही हूँ और इसको इसके ऊपर ही स्टिच कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरे में मैं इसको स्टिच कर लूंगी। तो इसके ऊपर ही स्टिच कर लेंगे, एकदम सीधे में स्टिच करना है। उसके बाद मैं एक दूसरी गोल्डन कलर की लेस ले रही हूँ और इसको इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ ऐसे दो बार मैं उल्टा करके इस तरह से जहाँ पे वी आया था वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा छोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये गोल्डन लेस लगने के बाद और बटन लगने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा। और आप चाहे तो इसको ब्लाउज में या फिर सूट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको छोटी स्लीव पसंद है तो ये पैटर्न बहुत बढ़िया है। और चाहे तो आप बड़ी स्लीव्स में भी ये इस पैटर्न को यूज करके बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया आपको? तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे तरह का आप सुंदर सा बहुत ही सिंपल वे में ये आइडिया बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इजीली आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट में मैं ये देखिए ये एक बहुत ही जॉर्जेट फैब्रिक में है, कॉटन फैब्रिक ले रही हूँ, साथ में ये वाला फैब्रिक ले रही हूँ और इसको उल्टा करके हम स्टिचिंग लगा लेंगे। सीधे में स्टिचिंग लगानी है सिंपल वे में। और साथ में मैं एक और क्रीप वाला फैब्रिक ले रही हूँ, उसको इस तरह से देखिए हाफ में मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे सीधे में। और हमें एक पट्टी लेनी है और उसको स्टिच करना है। तो पट्टी लेंगे इस तरह की, देखिए मैंने पट्टी ली है और सीधे में इसको एकदम सीधे में स्टिच करती जा रही हूँ मैं। सीधे में स्टिच करने के बाद इसको उल्टा करेंगे और हमें कम से कम 5, 6, 7 सा कुछ स्ट्रिप्स ही बनानी होंगी इसको उल्टा करके। तो मैं वो रेडी कर लूँगी। और अब ये देखिए इस तरह से देखिए इसको उल्टा करके मैंने रखा है यहाँ पे और स्टिच लगा रही हूँ। फिर इसको सीधा कर लेंगे और फिर टॉप स्टिच लगा देंगे और इससे पूरे में स्टिच कर लेंगे। अब देखिए जो ये यहाँ पे इसको फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा सही से बैठ नहीं रहा था तो इसलिए थोड़ी सी फेविकॉल यूज करके आप इस तरह से अच्छे से उसको सेट कर सकते हैं। और ऐसे मैं इसको पूरे में सीधे में स्टिचिंग जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। हम जो भी पैटर्न के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है वो कट कर लेंगे।
इस तरह से मैं जो भी एक्स्ट्रा लगा वो कट कर लिया। अब बारी आती है, हम ये देखिए मैंने जो पट्टियाँ काटी थी, मैंने जो क्रीप से बनाई थी, उन पट्टी को इस तरह से लगाना है। 5-7 आप इस हिसाब से ऑड उसमें लगाइएगा, ऑड नंबर वाइज। तो इस तरह से 5 लगाई है मैंने, और इस तरह से नीचे एक लेस भी लगाएंगे। तो लेस के अंदर इन पट्टियों को दबानी है हमें और फिर स्टिचिंग लगानी है। तो इस तरह से देखिए अब इसमें पूरे में स्टिचिंग लगानी है हमको। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पूरे में स्टिचिंग लगा रही हूँ, और अभी यहाँ पे लेस पे स्टिचिंग लगाऊंगी, और इस तरह से ये पूरा पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। आप पिंस वगैरह सब हटा सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो भी है उसको भी कट कर लीजिएगा। तो ये आप कोई ड्रेस हो या आप ड्रेस बना रहे हैं साड़ी से, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ अलग वे में आपको बनाना हो ना, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। इस तरह का पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये रेगुलर पैटर्न नहीं है थोड़ा, बट ये थोड़ा ड्रामेटिक, अगर आपको कुछ स्टाइल करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको पैटर्न को बना सकते हैं। तो थोड़ा ड्रामेटिक है ये, और अगर आपको ऐसा सही नहीं लगा तो आप इन पट्टियों को भी स्टिच कर सकते हैं इसी के ऊपर, अदरवाइज इट्स गुड टू गो। आपको देखिए ये पैटर्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा ड्रामेटिक पैटर्न है बट इट्स ओके। Whenever beginners start sewing, the biggest confusion is sleeves. So if armhole is wrong, the sleeve will never fit. If sleeve cap is wrong, sleeve will twist or pull. Now we will draft the basic sleeve block. This block is the foundation for all sleeve designs. Okay, I'm going to explain step by step. So draw a vertical center line, mark sleeve length, divide armhole measurement. Okay, so it will be around, for me is like 8.5 inches, and for creating a cap, sleeve cap, it will be 3 inches, and it can be bigger according to your biceps area, according to your hand, so it will can be different. Front curve is slightly deeper, back curve is smoother. This small difference decide comfort. 90% sleeve fitting problems come from wrong sleeve cap shape. So you have to measure widely ki what size will fit on you. So for me it is 3 inches sleeve cap is perfect, and after that I am also making this pattern here, and according to all the measure I have taken, I am making straight line and making this pattern, and this I am going to use in my whole video, and for the next all the sleeves that I am going to make in my next projects. So this is how you can make your own sleeve pattern. Okay, now once the basic draft is ready, changing sleeve length is very easy. Okay, so we can cut according to whatever size we wanted. Next is I'm going to show you ruffle sleeve pattern. So I'm just again placing this pattern sheet here and making cut according to that, and we are also need some fabric of 1 or 2 inches. I'm going to cut it and place these sheet of this fabric strip here. We have to make 2-3 straps, and so first of all I'm just finishing these strip by folding one side of it, and now I'm stitching these strips on the sleeve pattern like this, and making pleats here, and we have to attach all the 3 strips in this, and this is how it will turn out. And we have to stitch on the that side, and this is how it will turn out. It is looking so amazing pattern. I think I should definitely try to make an outfit by using this sleeve pattern, so it is looking really amazing. So I'm placing this sleeve pattern just I made on a different fabric, and I'm going to just making marks here, and then after marking all the details, then I will cut it out, and this is how it will turn out. So this is after the cutting, it will turn out like this, and we will open it in from the middle, and I am marking at 2 inches. We are going to draw a straight line here, and again I'm marking at 2 inches in this line area, and on all the 2 inches markings we have to cut along with these lines. Here I am cutting all these from the mark, and once they are done we have to make 2 folds here, and this will turn out to be a
a small little triangle. So we have to stitch all the we have to fold 2 times and we will stitch it in a straight line, and these turn out all these triangles here, small little triangles, and we will place a lace underneath it, and we will make a top stitch here like this. And after that, once it is all stitched around, we will use a lace. I am using this pink lace here and making a straight stitch on top of it, and it is a really optional idea, but yeah, it turned out like this. So you have to make it according to your fabric and what color suits with that fabric. So white and pink are going with this, so I decided to use these 2 laces and make this beautiful pattern with it. So this is how it turned out. Again, I am using this sleeve pattern, and I placed 2 different color of fabric here, and place this sleeve pattern here and making marks here. And now we have to use a scale, and then we will we have to draw lines in a triangle format. So we have to cut along all the marks we have done right now. And see, I am using different purple color here, light purple color, for the another fabric, and we have to stitch this stitch along these 2 lines, straight lines, and we have to stitch along straight line, in a straight line. And after it is finished, we will cut out extra, and we will flip it out, and this will turn out a rose shape or flower shape design. So and we will use some extra strip of fabric here and some lace. But before that, I am going to use some needle and thread to make it even a rose pattern here, and I am also using a bead in the middle of that. And after it will be hand stitched, it will look like this, so beautiful and amazing. So we have to make it finish. So I am going to use this strap of fabric here and making a stitch, and I folded it in like this for making, you know, piping. For that, after that, I'm using a lace. I'm using a lace to enhance its look, and this is its final look. It is looking really amazing, and it is you know, you can see a rose pattern here in the middle sleeve design in this video. I hope you like it, and please subscribe to my channel for more interesting and beautiful designs. And thank you and bye.